स्पीकर हैं, उनके पुत्र की दीर्घ आयु की कामना हम सब करते हैं। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन चूंकि उनका पुत्र अभी छोटा है, तो हम सबसे पहले वर्णिका सिंह जी को सादर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आज वो एक ऑरा फोटोग्राफी के बारे में बताने वाली हैं। कर्लियन फोटोग्राफी शायद जिसे कहते हैं। पिछली बार भी उस पर वेबिनार हो चुकी है। वो आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आपकी इस हरियाली तीज के प्रोग्राम को धन्यवाद। उससे मेरी पूरी चेतना लौट आई। मैं कहीं बीमार बीमार फील कर रहा था, वो सब हट गया। बहुत बहुत आभार आपका, सभी का बहुत बहुत आभार। मैं मैडम वर्णिका सिंह, ज्योतिष दत्ता जी और साइनिका बोरा जी का स्वागत करता हूं, और नई चीजें सीखने का कुछ न कुछ आश्वासन निश्चित मिलेगा मुझे। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी को ब्रीफ प्रियम्बल के लिए सादर आमंत्रित कर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। हम समय के मर्यादा को देखते हुए हम औपचारिकता में बिल्कुल भी समय नहीं खर्च करना चाहेंगे। बिटिया को बधाई देते हैं, बहुत बहुत शाबाशी देते हैं उनके हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और उन्होंने बहुत पहले से बुक कर लिया था, और ये विशेषता इस बात की कि आपका एमडी की थीसिस का वर्क जो है वो ऑरा फोटोग्राफी पर है, इसलिए उन्होंने वॉलंटरीली इसको दिया। तो मैं चाहूंगा हमें बहुत नवचेतना मिलेगी, बहुत नई जानकारियां मिलेंगी। कहाँ से एमडी की सर? आपने एमडी खुशीलाल से की कहाँ से? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा, अरे क्या बात, हम भूल गए थे, सॉरी, क्षमा टॉपिक हर इंस्टीट्यूट में नहीं है, क्षमा करिए, हम भूल गए थे। इसने बताया था मेरे को, अय्या से की है इसने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से की है, निश्चित रूप से, और सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। तो जब कभी कैमरा का ही आविष्कार नहीं हुआ था, प्रकाश के द्वारा हम लेंस की सहायता से फोटो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। और जब नहीं था तो पहले पोर्ट्रेट बनाते, तैल चित्र बनाए जाते थे, यहाँ पर कैमरा से कोई मतलब नहीं था। तो चित्र की उसके लिए अपने पूर्वजों के चित्र फोटोग्राफ्स नहीं मिलते हैं, तब ऐसे ही मेमोरी के आधार बनाए जाते थे। अब पुराने हमारे जो बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं और हुए, जो अशोक के काल से लेके आगे सभी, तो वहां से चलते चलते आज इतनी ज्यादा होगी, एक सेकंड में आप हजारों फोटो खींच सकते हैं। और फोटोग्राफी में तो अब ये कहा जाता है, मैंने भी बीएचयू से हॉबी सेंटर से डिप्लोमा इन फोटोग्राफी लिया हुआ है, मुझे खुद थोड़ा सा एबीसीडी है मेरे पास। लेकिन जब वो कहते हैं कि आजकल जो इतने अच्छे कैमरे आ गए हैं, वो कहते हैं यू क्लिक द बटन, यू विल डू द रेस्ट। मतलब इतनी ज्यादा ऑटो फोकसिंग, ऑटो लाइटिंग, ऑटो इमेजिंग, ऑटो सर्चिंग, ऑटो एडिटिंग, ऑटो क्रॉपिंग, व्हाट नॉट, यू पुश द बटन, वी विल डू द रेस्ट। बताइए कितना बड़ा आश्वासन है प्रोफेसर पवन शर्मा जी, सबसे बड़ा आश्वासन तो आपकी कैमरा निर्माण लोगों ने मन दिया है, हमें कुछ करना नहीं है। और उसके बाद बाकी काम जो है, जितने ये जो हमारा जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, वो ये जॉब वर्क करते हैं, वो कर देते हैं। काला, सफेद, गोला, रंगीन, नीला, पीला, ऑर्नामेंटेशन, मालाएं चढ़ा दें, कुछ भी बना सकते हैं। तो आज हम बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं अपने तीनों ही अतिथि वक्ताओं से। हम समय को न खर्च कर उत्साह से परिपूर्ण है कि आप लोग हमें नई चेतना देने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और हमेशा आप जुड़िए। और आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओवर टू पवन शर्मा जी। स्वागत है वर्णिका जी, स्वागत है, प्लीज। Okay, thank you so much, sir. Thank you. Respected all the dignitaries, I am Radha Varnika Singh. I am starting my PowerPoint presentation here. Let me share it. I think कुछ गड़बड़ हो रही है, I think. नहीं, आप को होस्ट हैं, आप आराम से शेयर कर सकते हैं। जी। बीच में स्क्रीन आ रही थी आपकी,
ऐसा रेणुका जी कह रही हैं। Yes. जी जी। Is it clear, sir? नहीं, अभी तक नहीं आई है लेकिन आपकी स्क्रीन। Screen, लोडिंग हो रहा है। मेरे नहीं, अभी नहीं Okay. आया, लोडिंग हो रहा है लगता है, कुछ सेकंड फर्क पड़ता है। सर अभी शेयर हुआ? नहीं हो रहा। आप क्योंकि अगर मेरे अगर मेरे अगर उससे आप तो दिख रहा है mostly। नहीं नहीं, एक बार उसको ऑफ करके फिर ऑन करिए। अभी नहीं आ रहा है यहाँ पर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं हो नहीं रही, हो रही नहीं है। नहीं हो। सर अभी शेयर है हाँ जी स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है, जी जी हो जी। रही है। Is it clear, sir? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेलकम मैडम। आ गया, गुड, वेरी गुड। Actually, aura photography मेरा टॉपिक था, but in the morning when I saw that pamphlet, तो उसमें photography for health था, तो actually I prepared my slides on photography for health. कोई बात So, नहीं। so I'll start my presentation here. So why is it important? हमारे लिए photograph actually important क्यों है? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, टू रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल। कोई भी हमारी हॉबी होती है या फिर किसी की हॉबी होती है डांसिंग, किसी की सिंगिंग होती है, किसी लोगों की होती है फोटोग्राफी। तो जब हम फोटोग्राफ करते हैं तो इट रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस हार्मोन एंड विच इज वेरी मच नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट एनहांसेस योर सेल्फ वर्थ। जब आप कुछ अच्छा फोटोग्राफ लेते हैं, आप जब उस किसी से शेयर करते हैं, जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तब उसके बाद जो आपका आप फील करते हो दैट इज वर्थ। आपको लगता है कि यस यू कैन डू दिस, आप एक अच्छा फोटोग्राफ ले सकते हैं, इसीलिए फोटोग्राफी इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज हेल्प्स ब्रिंग फोकस टू पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। समय हमेशा निकल जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग कभी हिल स्टेशन पर गए या फिर हमें कुछ अवार्ड मिला, and like we are here on this platform, like we are sharing the screen and we are sharing our words to each other in this platform, हम स्पीकर की तरह आ रहे हैं, तो ये भी हम वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। एक जो पैम्पलेट आज मॉर्निंग मुझे मिला, वो पैम्पलेट मेरे पास हमेशा रहने वाला है और वो रिमेम्बर करने में मुझे हेल्प करेगा कि मैंने कभी एज अ स्पीकर यहाँ पर मैं आई थी। सो पॉजिटिव जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसको हमें दोबारा दोबारा मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट हेल्प्स ब्रिंग मेमोरीज। बिना फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ्स के हमारे पास मेमोरीज होंगी ही नहीं। सो दैट इज व्हाई फोटोग्राफी इज इम्पोर्टेंट। So if we see the health definition according to WHO, it is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. And as per Ayurveda, we also know that some dosha, some dosha, some agni, some dhatu malhakriya, prasanna atma indriya manaha.
स्वस्थ इत्यपि धीयते। इट मीन्स केवल फिजिकल हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न होने चाहिए। तो मैं दोनों को लेकर बताऊंगी, लाइक फिजिकल हेल्थ में फोटोग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है एंड मेंटल हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस। तो इट इज अबाउट फिजिकल हेल्थ। क्या कर सकते हैं हम फोटोग्राफी के माध्यम से? इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइड बिफोर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन। कैटरेक्ट पहले है, लेकिन बाद में हमारी आईज कितनी अच्छी हो गई वो हम दिखाने के लिए स्किन डिसीजेस में स्पेशली लिया जाता है बिफोर एंड आफ्टर। तो किसी भी मेडिकल कंडीशन को दिखाने के लिए हम स्पेसिफिकली फोटोग्राफी का यूज करते हैं। Second thing is sense of happiness after seeing old photographs when you were obese. So I put here a photograph that is एक obese person है जो पुरानी फोटो को देखकर सोचेगा कि मैं इतना फैट था, इतना फैट थी, लेकिन बाद में जब वो अपनी आगे वाली फोटोज को देखेगी एंड शी फील और ही फील हैप्पी कि मैं कितनी ज्यादा पहले ओवरवेट थी। और तो इस चीज के लिए भी फोटोग्राफ्स हेल्प करते हैं। हम केवल मेमोराइज वैसे नहीं कर सकते कि पहले वे कितनी मोटी थी, हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन फोटोग्राफ्स के थ्रू हम अपने आप को इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि पहले ऐसा और अब ऐसा। तो बिफोर आफ्टर में फोटोग्राफी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द अनदर पिक्चर ऑफ दैट ओबेसिटी। For the development of any clinical database which I did in my thesis work, I put all the skin diseases. I have prepared standard operative procedure also कि कितनी डिस्टेंस से मुझे फोटोग्राफ लेना चाहिए। छोटा लीजन है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बड़ा लीजन है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लाइटनिंग कैसे होनी चाहिए, बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स इन माय एसओपी फॉर द थीसिस वर्क। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और उसके बाद से एक्चुअली में जो जितने भी मैक्यूल हमारे होते हैं, एक्जिमा के क्या सिम्टम्स रहेंगे, वो पूरा मैंने एक डेटाबेस तैयार किया था एक्चुअली। और बस अभी वो थोड़ा सा प्रिपरेशन में है। आई हैव टू लॉन्च द बुक ऑल्सो। मेरे पास 100 पेशेंट्स का डेटाबेस है ऑलरेडी, तो मैं उसको बुक को बस तैयारी एक्चुअली उस पर चल रही है, उसको आगे मुझे लॉन्च करना है। सो दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ माय थीसिस वर्क, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। सो हम लोग एक डेटाबेस बनाने के लिए भी फोटोग्राफ्स को यूज कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, हम लोग मेंटल हेल्थ में कैसे फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस है, लाइक इट इम्प्रूव्स सेल्फ केयर हैबिट्स। देयर वाज अ स्टडी इन लैंकास्टर इन इंग्लैंड, और उन्होंने बताया कि इट टेकिंग पिक्चर्स डेली एंड शेयरिंग दैम। एक मेंटल हेल्थ अगर इलनेस है किसी पेशेंट को, तो उसमें अगर हम लोग पिक्चर्स डेली बेसिस पर लेते हैं और उनको शेयर करते हैं, अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्या होता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और जिसकी वजह से हमें एक जो हमारी एंजाइटी है वो दूर होती है कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, सेल्फ वर्थ का पता लगता है। सो टेकिंग पिक्चर्स डेली एंड शेयरिंग देम, इट कैन हेल्प इन मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, मेक्स अ पर्सन फील रिफ्रेश्ड। अगर उसकी हॉबी है वो फोटोग्राफ लेने की, तो वो रिफ्रेश फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा वो पर्सन। थर्ड थिंग इज कीप्स अ ब्रेन बिजी। ऑब्वियसली अगर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो क्या होगा, उसका सारा वो खाली दिमाग शैतान का, अगर हम लोग ये ऐसा कोड यूज करते हैं, तो अगर वो बिजी होगा उनका ब्रेन, तो क्या होगा, वो जो इधर उधर की जो चीजें हैं उसमें उनका मन कम लगेगा, उनका ब्रेन बिजी रहेगा ड्यू टू फोटोग्राफी। एनकरेजेस कम्युनिटी इंटरेक्शन। अब कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो वो अपनी कम्युनिटी से मिलना चाहेगा, लाइक ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, अभी इंस्टा फेसबुक इतनी सारी चीजें हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी से मिलना चाहेगा, उन पीपल से मिलना चाहेगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जिससे वो फिर से अपनी जो भी मेंटल हेल्थ इलनेस है या जो भी है वो उसको भूलने की कोशिश करेगा फोटोग्राफी के माध्यम से। इवेंचुअली फाइंड सपोर्ट टू फाइट लोनलीनेस, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो अपनी लोनलीनेस से फाइट करने की कोशिश करेगा इवेंचुअली। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स ब्यूटीफुल विजन ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली कभी भी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हमें कोई अच्छा सीनरी देखने को मिलता है, पहाड़ या कुछ भी अच्छा देखने को मिलता है, हम हमेशा सोचते हैं वी हैव टू कैप्चर इट। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो मोमेंट उस टाइम के लिए है, आगे वो मोमेंट नहीं रहेगा हमारे लिए, तो इसलिए हम उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। वी हैव टू फ्रीज द मोमेंट एक्चुअली, क्योंकि हमें आगे उस मेमोरी को याद करके हमें अच्छा लगने वाला है, इसी वजह से। एंड आई पुट हियर द सनराइज फोटोग्राफ बिकॉज जो मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि आप मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स का सनरेज उनको जरूर लेना है।
इट इज बेनिफिशियल फॉर विटामिन डी ऑल्सो, एंड अगेन वो इतना सुंदर व्यू होता है कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ है जिनको किसी भी लेवल की, उनके लिए वो इतना पॉजिटिव और वाइब्रेटिंग मोमेंट होता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करती हूँ कि आप सनराइज होते हुए जरूर देखें और सनरेज जरूर लें, डबल बेनिफिट है एक्चुअली उसके। कीप्स द ब्रेन इन ग्रेट शेप, जैसे मैंने पहले बोला, ब्रेन बिजी रहेगा तो उसको एक व्यू, एक वे मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा बिजी रहने के लिए। तो ये भी एक टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उन्होंने बताया कि जितना पार्टिसिपेंट जो जितना डिजिटल फोटोग्राफी में एंगेज रहेंगे उतना उनकी मेमोरी अच्छी रहेगी, उतना वो अपनी मेंटल हेल्थ से दूर जाएंगे और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना पाएंगे। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एंड माई फेवरेट वन, अ गुड वे टू फोटोग्राफी क्या है, इट इज अ गुड वे टू बी इन टच विद योर पेशेंट्स। हाउ, कैसे हम लोग अपने पेशेंट के टच में रह सकते हैं, क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं मैं उनको पूरा प्रॉपर डाइट भी देती हूँ फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जो भी ले रहे हैं, जो मैंने आपको रेकमेंड किया है, वो मुझे फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाइए। तो उससे क्या होगा, पेशेंट विल रिमेन कंसिस्टेंट टू यू, उनको मौका नहीं मिलेगा झूठ बोलने का कि आज हमने ये लिया। तो लाइक दिस फोटोग्राफ, I have taken the photographs from Google, but my phone is loaded with almost 100 plus photographs with this kind of. So this is morning juice, we can say vegetable juice. तो इस तरह के फोटोग्राफ्स मेरे पास रहते हैं हमेशा। तो पेशेंट डालते हैं लाइक दिस इज सैलेड जस्ट बिफोर लंच एंड डिनर, दिस इज वी कैन से द डिनर और लंच प्लेट। तो इस तरह से क्या है, पेशेंट मेरे टच में रहते हैं। तो दिस इज अगेन एक मीडियम है टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो ये मेरा फेवरेट है और इसीलिए भी इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, इसलिए हम इतना ज्यादा इस फैसिलिटी को यूज कर पा रहे हैं। तो आई एम concluding my words here, like time comes and goes, but memories always remain in terms of photography. अगर फोटोग्राफ्स नहीं होंगे तो शायद हम उन मेमोरी को कहीं ना कहीं वो ब्लर हो जाएंगी, लेकिन फोटोग्राफ्स रहेंगे तो हम उन मेमोरी को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन for this opportunity, sir. Thank you. कुछ संक्षिप्त समय में ऑरा फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे मैडम? सर ऑरा फोटोग्राफी नहीं था एक्चुअली मेरा, उसमें मैंने फोटोग्राफी देखा तो तब मुझे लगा कि मेरा थीसिस वर्क फोटोग्राफी का है, मुझे ऑरा फोटोग्राफी का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है सर। मैं फोटोग्राफी था मेरा थीसिस में, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अग्निहोत्री सर। थैंक यू प्रोफेसर वंश शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्णिका जी। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि अपने पेशेंट्स से कांटेक्ट में और टच में रहने के लिए, और पेशेंट्स का आपके टच में रहने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है आज के फोटोग्राफी बेस्ड प्रोसीड्योर के थ्रू, कि हम देखें कि उन्होंने जूस लिया था कि नहीं लिया था, काढ़ा लिया कि नहीं लिया, डाइट है में क्या ले रहे हैं और किस टाइम पे ले रहे हैं जब फोटो पोस्ट करते हैं। ये तो जस्ट लाइक आजकल हमारा हो रहा है कि हम ऑब्जर्वर बने हैं यूनिवर्सिटी के, तो ऑब्जर्वर रिपोर्ट तुरंत पेपर आ गया, कोड में दिया, पेपर हो गया, एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम, तो वो आपको फौरन भेजना पड़ता है। ऐसे ही बंडल बन गया, रिसीव करा दिया, सब भेज दिया, तो इंटरनेट शीट भेज दी। तो ये सब फोटोग्राफी का कमाल है, मोबाइल का कमाल है। दूसरी चीज आपने जो इन फोटोग्राफ्स की मेमोरी के साथ में जो आपने कनेक्शन दिखाया वो वंडरफुल है। जब मेरी मैडम का ट्रांसफर हो गया था वहाँ बागेश्वर, तो हम लोग जाते थे, इतना बढ़िया सीन होता था नैनीताल से लेके बागेश्वर तक के बीच का अल्मोड़ा होके। मैंने शायद ही कैमरा बंद किया और मेरी मेमोरी खत्म हो गई, सब पेरे खत्म हो गए। इतने प्यारी फोटो निकली, आपको कभी हम दिखाएंगे भेजेंगे कि वो लगता ही नहीं कि हमने अपने मोबाइल से खींची होंगी। कभी गोल्डन कलर के एकदम हिल्स दिख रही है, कभी ग्रीन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ, हर टर्न पर एक शेड बदल जाती थी। बहुत प्यारी, कुछ स्टिल ली, कुछ वीडियो लिया, वीडियो से हमने फिर स्टिल कलेक्ट किया। तो नो डाउट अभी हम पढ़ते थे तब के 78 की फोटोग्राफ देखते हैं, हम बद्रीनाथ जी गए थे, और आज का देखते हैं तो वो सब एकदम से होता ना, शादी ब्याह की एल्बम इसी हिसाब से बनती है कि उस समय कैसे ब्राइड की कैसे तैयारी हुई थी, कैसे डेकोरेशन हुआ था एंड ऑन। So photography has got a wonderful place in our mind, and it gives you pleasure to be healthy physically and mentally both. Thank you so much, आपने इतने अच्छे टॉपिक को किया और कनेक्शन आपका पेशेंट से बना हुआ है, देख के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप आइंदा भी जुड़ा करिए, आपका हमेशा स्वागत है। आजकल ड्रोन फोटोग्राफी और सैटेलाइट फोटोग्राफी का जमाना है। हमें ये कहा जाता है साइंस के द्वारा कि हम अपने बाथरूम और बेडरूम में भी सुरक्षित नहीं है,
सैटेलाइट हमारी फोटोएं ले रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ओसामा बिन लादेन को ऐसे ही खोजा गया सैटेलाइट इमेज से, एक कमरे में, एक बंकर में। तो आप सोचिए हमारे बेडरूम और बाथरूम भी सुरक्षित नहीं है इस फोटोग्राफी के लिए। और शादियों में या किसी इवेंट में आजकल ड्रोन फोटोग्राफी का बड़ा चलन हो गया है, बहुत चलन हो। बहुत बहुत आभार मोनिका जी। मैं अब आदरणीय ज्योतिष दत्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ज्योतिष जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, ऑन है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है। स्वागत है, स्वागत है। आई वुड लाइक टू वेलकम ज्योतिष दत्ता जी फ्रॉम जोरहाट, आसाम। वेलकम। Your both the switch has connected, but neither voice nor video. अग्निहोत्री सर, थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ कि जुड़े हुए तो हैं, हमने पार्टिसिपेंट में ही देखा है। नवा नहीं कुमार जुड़े जी हैं, उनका दोनों स्विच ऑन है, वीडियो ऑडियो दोनों। ज्योतिष जी नमस्कार। अब तो माइक भी ऑन कर लिया है। यस ना, दोनों नमस्कार। नमस्कार ज्योतिष जी। आवाज नहीं आ रही है लेकिन। आवाज नहीं आ रही क्या? उन्होंने स्विच भी ऑन किया। हाँ, ज्योतिष दत्ता जी, आपका स्वागत है। आप अपनी वार्ता शुरू करिए। और नवा कुमार जी कुछ उनको फोन पर कह सकें अगर। सर नमस्ते सर, मेरा नेटवर्क बिल्कुल सर नेटवर्क नहीं है सर। यही लग रहा है कुछ वेदर प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जो उनका अनम्यूट भी किया हुआ है लेकिन उनकी आवाज ही नहीं आ रही। जी सर, सर नेटवर्क बिल्कुल कम है सर। अरे हाँ, कुछ होगा, वेदर कंडीशन ऐसी होंगी। तो हमारे आज के अग्रिम वक्ता जी को हम इनवाइट कर लेते हैं। हमारे अग्रिम वही है आगे। अच्छा, आज वही हैं। तो उनका जो स्टफ है वो हो रहे हैं, अगर उनका स्टफ भी उन्होंने भेज दिया होता तो थोड़ा समय का सदुपयोग हो जाता। कैसे करेंगे? हमारे पास आज हमारे अतिथि वक्ताओं के जुड़ने में बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। पहले में भी हम लोगों ने काफी जद्दोजहद की लेकिन अंत तक खींची ले गए। 9:15 बज गया। और पार्टिसिपेंट्स में अभी जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं उनका इस फोटोग्राफी के संबंध में कुछ विचार हैं, तो हम 2 मिनट का समय उपयोग कर लेते हैं जब तक उनका कनेक्शन जुड़ता है ज्योतिष जी का। आप बतलाएंगे डॉक्टर रुमालिया जी, नितिन रुमालिया जी, कि आपके विश्व विज्ञान में विभिन्न प्रकार के सर्पों की जो फोटोग्राफी है, जो अभी बाय द वे बरसात में या कहीं पाए जाते होंगे, उनको आपको टीचिंग वगैरह में कैसे हेल्पफुल होता है? कुछ आपका कोई अनुभव रहा है इस क्रम में? हाउ द फोटोग्राफी इज यूजफुल इन द एकेडमी एज फार द टीचिंग इज कंसर्न। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया जी। तो सर ये बिल्कुल फोटोग्राफी आज का एक अभिन्न पार्ट बन गया है हमारे उसके साइंस का। और हमारे आयुर्वेद भी, हम एक्चुअली मॉडर्न एरा में रह रहे हैं। हमारा साइंस एंशिएंट एरा का था, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम रह रहे हैं मॉडर्न एरा में। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी संसाधन है उसके साथ लेकर ही हमें चलना है और अपने विज्ञान को यानी आयुर्वेद को ऊपर भी बढ़ाना है। तो जैसे कि हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप है, एक्सरे है, तो ऐसे ही फोटोग्राफी का भी एक अलग पार्ट है। आप जैसे आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट दिखाता है, खासकर ओबेसिटी में, स्किन डिजीज में,
ये आपको हाईलाइट करता है। तो हम उसका डिफरेंस देखते हैं, किसी के बाल कम है तो बाल पहले कम थे, अब देखिए ज्यादा हो गए, ट्रांसप्लांट हमने की इतना अच्छा किया, सक्सेसफुल, ये सब दिखाने के लिए फोटोग्राफी का ही यूज होता है। और कहीं भी आजकल जो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा बनाना है अगर हमें, तो फोटोग्राफी के पास आपका एविडेंस रहना चाहिए कि बिफोर ट्रीटमेंट पेशेंट ये था, 7th डे ये था, 15th डे ये था, जो भी आपका टाइम पीरियड है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, वो उसके हिसाब से आपको 2-3 फोटोग्राफ्स सटीक बिल्कुल कंफर्मेटिव आपके पास रहना ही चाहिए। ये डाटाबेस में आता है। तो ये फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है फोटोग्राफी। और उसके बाद भी किसी को, जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप जब कोई डिजीज लेते हैं, चाहे स्किन डिजीज हो या कोई भी डिजीज हो, पैरालिसिस हो या जो भी, तो आपको पूरा, आप लिटरेचर बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप उसका पिक्चर एक बार में दिखा देंगे, वो पूरा ग्रास्प कर लेगा स्टूडेंट। जो आप इतना थ्योरी बता रहे हैं कि टंग ऐसा होगा या ये होगा, कोटेड होगा, ये सब कुछ आप एक बार में दिखा दिया आपने, कोटेड टंग और या जो भी टीथ ऐसे हो जाएंगे, वैसे वो एकदम से क्लियर हो जाता है, क्लिक हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो आज की जो स्मार्ट क्लासरूम है उसमें भी ये कारगर है, हम उसका यूज कर सकते हैं, उसको फोटोग्राफी का। और सर ने जैसे बताया कि विश्व विज्ञान में, तो हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम की बात करें हम, तो स्वस्थ, जब व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा, जब उस चीज को जानेगा, जब हम जानेंगे ये चीज पॉइजन है, हानिकारक है, हमें इससे दूर रहना है, नहीं यूज करना है, ये चीज हमें जानने के लिए हमें बताना भी पड़ेगा। जैसे सांप की कई वैरायटी होती है, उसमें कुछ निर्विष भी होते हैं, तो कई लोग सिर्फ डर के मारे, हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाती है सिर्फ डर की वजह से। पॉइजन कुछ नहीं है, लेकिन डर इतना बैठ गया घर अंदर कि उसकी वजह से वो हार्ट अटैक या कुछ भी हो जाता है। तो उस डर को दूर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आप स्नेक की दिखा सकते हैं, ये पॉइजनस स्नेक कॉमन ये हैं जो कि जनरली मिलते हैं, उसमें से कोबरा आता है, क्रेत आता है, रसल्स वाइपर आता है। तो आप इसकी बाकायदा फोटो दिखाइए कि आपको ये सांप दिखता है, इससे बच के रहें, और बाकी जो सांप दिखते हैं वो ठीक है, मतलब पॉइजनस उतने नहीं है। ये थे जो मेन 3-4 थे, ये ही मेन थे, तो हम बचाव भी कर सकते हैं इस प्रकार से हम। तो फोटोग्राफी का बहुत जबरदस्त यूज है, ये एक हमारा एक पार्ट बन गया है पूरे मेडिकल साइंस का। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत सही आपने निर्देश दिए कि हम इस तरीके से फोटोग्राफी का आधार लेके और एक प्रथम दृष्टया बच्चों को, क्लासरूम के बच्चों को समझा भी सकते हैं। इस दिशा में हम जानना चाहेंगे कि देखिए, जो आपने कहा मॉडर्न एरा से पिछले को जोड़ने की बात जहाँ पर आती है, आप ये सोचिए कि जिनके पास जो वाला कैमरा था दद्दुषु ज्ञान चक्षुषा, उसका तो आज तक कोई रिप्लिका बना नहीं, न बन नहीं सकता है। अगर बन सकता है तो फिर उसके लिए 20 हजारों साल की तपस्या चाहिए, तब ज्ञान चक्षुषा वो देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम घर से ही शुरू करें, छोटा बच्चा आरती देखता है, उसमें लौ जलती हुई होती है, अगर हम चित्र में ना दिखाया और पहले ले गए तो कहते हैं ये फायर वर्क है, हमें जल सकते हैं। ये बताना होता है कि वहाँ हीट भी है, चित्र में हीट नहीं दिखाई पड़ती है, हीट में खाली फोटो होती है। ऐसे ही हम कोई अगर धूप जलाते कुछ करते हैं तो बच्चों को प्रथम दृष्टया फोटो दिखाई, फिर उनको पेट्रोल दिखाया। ऐसे ही बच्चे घर में बैठे रहते, पता चलता है समुद्र है, जल है, कोई बात नहीं, लेकिन समुद्र नहीं देखा होता है, तो समुद्र की क्या गहराई है, क्या लहरें हैं, पहले चित्र से केवल दिखाई पड़ता है, फिर साइड पे जाके उनको देखने में आया तो समझ में आता है। गंगा जी एकदम सरफेस वाटर है, उतरते हैं नीचे तो शरीर कमर तक जल में चले जाते हैं। तो ये चीजें बहुत कुछ फोटोग्राफी से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज का हमारा जो दृष्टिकोण था फोटोग्राफी का, लाइफ में, जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, सभी जगह उपयोग है। जहाँ अपने फोर फादर्स की फोटोग्राफी देख के याद करते ऐसे थे, शीश में प्रैक्टिकली आजकल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी तृतीय वेबिनार के लिए 5 मिनट में ले रहा हूँ जब तक ज्योतिष जी जुड़ रहे हैं। अच्छा, ज्योतिष ठीक जी है। का ऑडियो नहीं जुड़ पाया है अभी। जब ऑरा फोटोग्राफी की बात चली तो थोड़ी सी संक्षेप में शेयर करना चाहता हूँ। जी ऑरा फोटोग्राफी, ऑरा क्या है? सबसे पहले तो ऑरा या आभा की हम बात करें, ये एक एनर्जी फील्ड है हम लोगों के चारों तरफ। लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी फील्ड है, जिसको ऑरिक फील्ड कहते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी ऑरिक फील्ड में डूबी रहती है, जैसे एक स्पंज सोक्ड रहता है पानी में, पानी के पूरे वाटर में। हम यदि ऑरिक फील्ड को देखें तो आप देखिए पूरे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक सभी कुछ ऑरा में हमारा समाहित है। उसी को बेस बना के क्रिलियन फोटोग्राफी हुई, डिस्कवरी। ये पतंजलि का भी नाम इन्होंने लिया। पतंजलि जी ने भी डेफिनेटली इसमें बहुत काम किया होगा आभा को पढ़ने में।
द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन इज बाय पतंजलि। लेकिन जब मेटाफिजिकल कंसेप्ट की बात आती है तो एक रशियन इलेक्ट्रिशियन थे, सिमियोन क्रिलियन। अब ये सिमियोन क्रिलियन जो इलेक्ट्रिशियन थे, उन्होंने इसका फोटोग्राफ लिया एनर्जी फील्ड का, इसीलिए इसको आज भी क्रिलियन फोटोग्राफी कहा जाता है। और जब वो वैलिडेट करने की बात आई तो साधुओं से उनको वैलिडेट किया गया। ये थे सिमियोन क्रिलियन, जिन्होंने ऑरा फोटोग्राफी का आविष्कार किया, और बाय वर्च्यू ये अपने इलेक्ट्रिशियन थे। अब ये देखिए, एक एक चीज में ऑरा है उस चीज का, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, ये इसका ऑरा अपने आप रीड किया जाता है। अब ये नए एक आ गए ऑरा रीडर्स कंपनी है, जो रेडियकिल ऑरा रीडर सॉफ्टवेयर, ये एक पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने। ये कोई भी इसको यूज कर सकता है खरीद के, डेफिनेटली। तो ये इसकी ऑरा के बारे में बताता है। अब एक विचार बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने अभी 5 मिनट में ही खोजा है जब देख रहा था कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। थॉट्स एंड ऑरा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। थॉट से इमोशन, इमोशन से एनर्जी, और एनर्जी से फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ये एक पूरी संप्राप्ति है इसकी जो भी है। यदि नेगेटिव थॉट्स होंगे तो डिस्टर्ब इमोशंस होंगे, ब्लॉक्ड एनर्जी फ्लो होगा, और अनडिजायरेबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। यदि पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो वो एम्पावरिंग इमोशन मिलेंगे, एनर्जी फ्लो अनहिंडर्ड रहेगा, और डिजायरेबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमको मिलेंगे। अब थॉट्स एंड वाटर, ये लोग भी ऐड बीच में डाल देते, नहीं तो उनको मालूम कैसे पड़े। वाटर एक्सपोज टू द वर्ड एंजल, यदि पानी के सामने हम एंजल कहें तो देखिए ऑरा क्या आया है, पानी तक पे असर है, ये भगवान मालिक है इनका। वाटर एक्सपोज टू द वर्ड डेविल, डेविल में देखिए मैं थैंक यू देता हूं aurareader.com को, आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट माय सिंसियर थैंक्स टू ऑरा रीडर, दैट्स व्हाई यूट्यूब विल नॉट डिलीट इट, आई होप। लेकिन वाटर एक्सपोज टू वर्ड डेविल, ये आप देखिए किस तरह के हमको मिलते हैं। वाटर एक्सपोज टू वर्ड लेट्स डू इट, मतलब हम मिलके काम करें, और वाटर एक्सपोज टू वर्ड डू इट, ये ऑर्डर है। तो आप देखिए दोनों के ऑरा में कैसे डिस्टरबेंस का अंतर है, एक सुंदर ऑरा है, एक डिस्टर्ब्ड ऑरा है। हमारी मेजर बॉडी का पार्ट और वाटर है, तो वाटर में ही हमारी पूरी की पूरी ऑरा का क्लियर समझ में आ जाता है। ऑरा बिफोर थेरेपी और आफ्टर थेरेपी एक साथ बिल्कुल निकल के सिमेट्रिकल हो जाता है, ऑरा बिफोर थेरेपी और आफ्टर थेरेपी। ऑरा फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन अंडरगोइंग स्ट्रेस, देखिए कितनी विकृत हिसाब से ये ऑरा आती है, और इसी से ऑरा रीडर मेरे हिसाब से इसको समझ पाते हैं। ऑरा फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन विद पॉजिटिव माइंडसेट, देखिए कितना नीट एंड क्लीन, जैसे हमको हमारे हर फोटो में इसको ऑरा को देख के एक बात आती है, हमारे हर भगवान के सिर के पीछे, होना तो पूरे शरीर के पीछे चाहिए था, लेकिन हर सिर के पीछे एक ऑरा का फोटो होता है। ऑरा इसी तरह की, यदि वो पॉजिटिव माइंडसेट है तो ऑरा इसी तरह की आती है। ये काउंसलर्स को फायदा करता है, डाइटिशियन को फायदा करता है, एनर्जी वर्कर को फायदा करता है, ईएफटी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेडिकल प्रैक्टिशनर को फायदा करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर को फायदा करता है, मेडिटेशन टीचर्स को फायदा करता है, माइंड पावर ट्रेनर्स को फायदा करता है, वास्तु कंसल्टेंट को फायदा करता है, सीकर्स को फायदा करता है। थैंक यू। ये मैंने बीच के समय का उपयोग किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि ज्योतिष जी जुड़ चुके हैं तो स्वागत है। ज्योतिष जी, वेलकम वेलकम। Thank you so much, Pawan sir. Thank you so much, Vineet sir. Sorry, my audio got disconnected. My video got disconnected because of poor network. And I'm so grateful to be here sharing my knowledge of photography. And regarding today's topic, photography for health. Sir, is my voice audible to you, sir? Yes, yes. Okay, sir. I'll just share my screen with you. Sir, can you see my screen now, sir? Yeah.
Okay, so regarding today's topic for discussion, photography for health. We know photography, as Madam has already stated, photography is a great stress reducer. It reduces anxiety, helps in self-expression. But I wanted to talk about something which I've been practicing for the last 15 years, and I call it photography for mindfulness. Like being a photographer, professional photographer for the past 16, 17 years, it has become important for me to be mindful of my surroundings. And the way I have been practicing my photography is helping me being more has been helping me being more responsive to the surroundings around me. So just to define mindfulness, what I mean by mindfulness, for me, mindfulness is a practice of being fully present in a particular moment, in that particular moment, that is to be aware without any judgment, the kind of cultivation of a non-reactive state of mind, and being very observant and focusing on details which I would normally not look at. So that is what I mean by mindfulness. And I'd like to show you what I do to do in my photography to help me be mindful of my surrounding. So I start at home. I do a thing called daily photo journal. I shoot every day, whether I'm shooting professionally or for personal purpose. I shoot every day, and I make it a point to start at home. So this is the screen that you see in front of you. It is a picture of my window, and it is a picture where the early morning light, it falls on the netting of the window curtain, and the particular way in which the light falls on this thing, it is an abstract for me, so I took this picture. So I'm being mindful of the light that is falling on this curtain, and the aura associated with this. Let me give you another example. So this I'm looking at a wall where it's a concrete wall, and I'm looking at the patterns created by nature, and you can see that there's a little green plant there, and that is responsible for creating this beautiful texture. Let me show you another example. So this is basically a roof, a tin roof, which has gone bad and which had to be taken out. And if you look carefully, you'll see an eye, a shape of an eye, and as a whole, it looks like a head of an elephant. Can you see that, sir? Yes, yes. Okay. So all these are very simple practices, photography practices that I do in and around my home to practice to help me in being mindful of my surroundings. This is another very simple example of mushrooms. This is again a very simple example of how late evening light falls on a couple of wild grass. This is again evening light and how it falls on house plants in and around my house. I'm looking at it from a design perspective. I'm looking at all the graphical elements, all the triangles that it is making, all the diagonals that it is making. I'm looking at the colors. I'm looking at how the colors sync, the green and oranges, the reds and oranges, the color schemes that are syncing together to create this scene. This is another backlit photograph of houseplants, flowers which have been backlit. This is a plant inside my house,
and I'm looking at how so the table lamp is lighting that particular leaf as it lies on the table. I'm looking at the flow of the leaf. It creates a very, very beautiful diagonal. This is again me studying the light that is falling in a small crack near the wall and lighting up wild plants, making it a very graphic picture. This is a picture of fungal growth on a piece of wood. And if you look closely, you might see the shape of a horse. So what I'm trying to do here is I'm trying to let my mind imagine things. I'm letting my mind form associations, form images in my mind, which I can relate to. This actually is my PC, my computer CPU, and these are the sockets of the headphones, the microphone, and the USB. And to me, it looks like a human being with two eyes and a mouth. So this is me being mindful of my surroundings. I'm trying to, I mean, these are things which I would normally not observe. But ever since I've started practicing looking at details like this, it has helped me in my photography, especially when I go outside, when I do landscape photography, when I go for professional assignments. It helps me a lot. This is again another picture of a simple socket, and to me it looks like a face, probably the shape of a dog. I'm a dog lover, so I can see a dog here with 2 ears. I'm letting my imagination run free here. This photograph is of pumpkin plant that has been backlit. Pumpkin plant has veins like veins like this, and it is backlit. And if you observe carefully, you might see a face. Can you see a face, sir? With two eyes. Yes, it's creativity, great creativity, excellent. So, and this picture is of water from my tubewell at home, and the shiny blue part, that is actually iron deposits that is there in the underground water underground water system. So this is again has been done at home. Though it looks very colorful, the blues syncs with the reds of the plants, and you can see dead mosquitoes here and there. But actually, it is a very it is a very simple photo of underground water contamination. This is a chili. We call it Nagamircha, and it is one of the hottest chilies in the world. I took this picture because I kind of saw a face here. If you look carefully, you might see a side view of a person, a head of a person in this picture. So here again, I'm letting my imagination run free. I'm looking at it from a different perspective. Can you see a face, sir? A resemblance of a face? Definitely. After your viewing version and creativity, definitely we are able to. So this is again another face. This is a face of a person. I mean, it's created by weather. Like the paint job has come off. You can see a nose, you can see her eyes, you can see her ears.
This is again letting my mind imagine things around me. गजब गजब है जी गजब. Excellent, excellent. So this is again, I'm looking at this is at a conference hall which I had where I had gone, and this is simple. The way the light was interacting with the chairs. It is I mean, I like the way that the light was interacting with the chairs, so I took this picture. I'm just being mindful of what is around me, sir. This picture is of my chair. Actually, it is the rexine of my chair. The chair is old now. The chair is almost 8 years old now, and the rexine is beginning to tear. And if you look closely, you will see the structure of trees. The trees and the way the light is falling, you will see branches and tree formation. Can you see it, sir? Very, very nice, very imaginary. गजब गजब creativity है गुरु गजब. गजब गजब. So so what I'm trying to do in this exercise is I'm looking at very simple things, but from a different perspective. I'm always asking myself, what else do I see here? I'm slowing down my thought process. I'm normally what happens is we see a thing, we take out our mobiles or we take out a camera and just click. But what I'm doing here is I'm slowing down. I'm looking at the thing again and again. I'm going around the thing, and I'm asking myself, what else do I see here? What else do I see here? What else makes sense to me? And this is early in the morning when I have a cup of tea. I start my day like this. Before I take my tea, I try to arrange light in a particular way. I try to arrange my stuff in a way to make a photo. This is my daily practice that I do. This again, simple practices. Another little practice that I did on my wall here. You might see a face, a side view of a person with the eyes and the nose. This is actually water creeping up on a wall after rains. This picture is a very simple representation of the monsoon season in the Northeast. It has been raining for many days now. And this picture is a reflection of my umbrella on the floor. I wanted to create something very graphic with this. So this is what I ended up doing. Sir, can you see what this is? Mobile. Sir, this is the blade of a fan, sir. अरे गजब. If you look carefully, you'll see two eyes and a mouth. This is just the blade of a fan. क्या बात, क्या बात. Can you see the two eyes, sir? And the, yes. the mouth? And the mouth is open. Yes. Yes. So what like I said, I'm looking at things and I'm asking myself, what else do I see? What else do I see? I'm not limiting my mind. I'm letting my imagination run wild. So this is a tomato plant, and in the tomato plant, you can see there is an insect. An insect has made a design. To me, that design looks like a person who is trying to balance himself on the waves. He's surfing. Can you see the surfer, sir? Wonderful, wonderful. Yeah. Two arms, he's trying to balance himself. This is not created by me. I'm just observing the creation of an insect, and I let my imagination. Or some look of a strong man. Some look like a strong man. Yes, sir. Yeah. This is again a construction site at home where they were plastering the walls, and I could see a face with tears rolling down the cheek.
Can you see the tears, sir? Can you see that face Yes, on the right? It is a simple construction site, but there was this kind of a face which I saw, so I took this picture. This is again at that same construction site, and this here I'm trying to establish a relationship with nature, what nature has made and what man has made. I'm trying to see if there's a sink, if I can sink it. To me, it looks like a tree, a huge tree, with the sky as the leaves and this iron post as the stump. This again is a kadhai in my kitchen. The kadhai is very old now, and I could see a face here, so I took this picture. Can you see the face, sir? yes. Yeah. This is again, I'm observing how the light is how the light is falling on my pet dog here, and I took a low angle to capture both my dog and her reflection. This is an old gate, and to me it looks like a person smiling. It is to me it is like the side view of a person who is smiling. So I'm trying to find beauty in simple things. Can you see that smile, sir? Yes, definitely. आप हिमालय में निकल जाओ या पहाड़ पे निकल जाओ तो आप हमेशा विजिबिलिटी ग्रेट Venture is not there. That smiling face is the old one. Sir, that was a smiling face, but this one is a sad face. Can you see that sad face, sir? This is a sad face, sir. ऊपर yes, shadow. The black part is the hair, the two leaves are the eyes, and the leaf below is the mouth. क्या बात क्या बात क्या बात. अरे वाह भाई वाह ज्योतिष जी. आप तो बिल्कुल ज्योतिष की तरह प्रिडिक्ट करते हैं उनको. गजब है. So this is all happening around me. We just need to be observant. This is a tree trunk, and like I said, I would go around the tree trunk and see what else I can see. So this tree trunk, in this tree trunk, I saw the image of an elephant. Yes. Sir. So I took this picture. Here again, early morning in Jorhat, and I could see a side view of an animal with the sun as its eyes. I position myself in such a way that the sun is behind the trees and it looks like an eye. If you cover your hand with the, if you cover the picture with your, if you cover the right hand side of the tree with your hand, you'll see that head of an animal. This is again another old seat, and the seat is coming off, the rexine is coming off, and I saw a tree, so I took this picture. This is along the route in Arunachal, and to me it felt as if the mountain was sleeping. Can you see a sleeping face here, sir? A side view of the mountain sleeping, of a person sleeping. If you look closely, you'll see the side view of a person sleeping. और फेस को ढकने के आसपास आपने कैनाबिस की लीव्स भी रखी हुई हैं. हाँ सर. कैनाबिस की लीव्स दिखाई पड़ रही हैं. हाँ सर. Yes, this is in Arunachal, and it's along the road. So there's a face kind of a structure here. Great. So
I'd like to share one more folder with you. How I'd like to show you how it translates. Okay. Can you see this picture, sir? Yes, sure. Very good. Very nice. So ये तो पुरानी वाली है, नई नहीं आई ना? हाँ सर, नई आई, ये तो पुरानी है, रोड वाली है कैनविस पर. This is the previous one. Yes. just a second, sir. मुझे तो एक ही क्रिएटिविटी आती है सर, जब हम हवाई जहाज से जाते हैं, when we are traveling through एरोप्लेन, हाँ वो सर, जो चारों तरफ बादल दिखते हैं, उसको मैं क्षीर सागर समझता हूँ. ओके दूध सर. के सागर जैसा लगता है, और उसमें हाँ. विष्णु भगवान कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन वो क्षीर सागर लगता है. चलिए, प्लीज कंटिन्यू. Okay, so how is my little practice helping me? See, I'm being more observant when I go out to shoot in nature. I'm observing the behavior of other animals also. Like in this case, the two crows, they are fighting over a dead carcass, and it is very interesting that how one crow is trying to prevent the other from eating eating the carcass. Great. Great. Normally, we ignore crows, but they are very intelligent birds. Okay, let me show you another picture. Okay, so this is again in and around me. Here I'm trying to tell a story where the leaf, I mean, the season is changing. The only leaf, there's only a little branch where the leaf is still there. Otherwise, all the leaf has shed. So this is, I'm trying to tell a story where the season is changing. This is again, I'm trying to apply whatever I practice at home. When I go outside, I try to put it into practice. I'm looking for smaller details. I'm looking at the activity of the little insects in the sand and how they create textures in nature, along with the natural textures created by water. This is a shot of the sunrise that happens in Dong. Dong is known for the earliest sunrise in India, and this is the shot of that sunrise. Dong is in Arunachal Pradesh. So here the moon is about to set and the sun is about to rise. This is again the earliest sunrise in India, in Dong, Arunachal. This is again in another trip where I'm observing how the light is backlighting a roadside tree and simply illuminating it, giving it another color, and you know, it's a different feel. This is again me being mindful of my surroundings. This is a fallen tree and mushrooms. This is an early morning sunrise, early morning scene in one of the tea gardens in Assam. People felling wood for the kitchen. This is again a simple leaf where I have lit up the leaf with a colored flash to make it very graphic in terms of color. This is a picture of my dog and the way the light falls on her. This is again ripple marks that is produced in a river scene in Arunachal. I'm a big fan of trees. Slide timing. Okay, sir.
Slides fast. Okay. I'm here again. I'm looking at light. This is a scene of the Brahmaputra as it enters Assam, and the light. This is again a scene of the Brahmaputra from an altitude, higher altitude. This is I'm trying to juxtapose trees with the clouds behind. This I'm trying to juxtapose man-made stuff with nature. Simple juxtaposition of trees with the sunset. Here I'm trying to juxtapose a telephone, a network tower with the sunset. Here again, I'm trying to juxtapose the branches with the clouds, giving it a airy feeling as if the wind is moving towards from left to right. This is again simple observations, very simple observations. Waterfalls. Big fan of trees. So this is early morning light in Arunachal. Early morning light. This is how the forest lights up when the sunrise falls. Sunrise falls and falls on the trees. This is me trying to be creative with some camera movement. This is along the banks of the Brahmaputra. This is slow shutters. Okay, sir. So what this does is, being mindfulness helps me focus more on details that I would normally miss, and I have a better recall of the scene. When I come back home and look at the pictures, I have a better recall of the scene, and sorry, my mic got disconnected. So yeah, I have a heightened sense of awareness because of this kind of a practice. So with this, I'd like to end my presentation here. Excellent, Jyotish ji, excellent. आप तो निर्जीव में सजीव बना देते हैं, निर्जीव में जान डाल देते हैं. गजब, गजब जी, गजब. थैंक यू ये सर. बहुत अच्छा व्यू है आपका. ब्यूटीफुल. मतलब आप हर चीज में कुछ ना कुछ एक विजुलाइज करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अग्निहोत्री सर. थैंक यू सो मच सर. Excellent. Thank you, Professor Sharma ji. Thank you, Jyotish Dutta ji. Wonderful presentation. जैसे कि पवन शर्मा जी ने कहा कि आप तो निर्जीव में जान डाल देते हैं, उसको हम श्रेष्ठा कहते हैं, क्रिएटर. वो श्रेष्ठा है जो वहां भूतात्मक शरीर में सोल डाल देता है, आत्मा डाल देता है, प्राण डाल देता है. तो आपने सजीवता प्रेजेंट की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. बहुत ही क्लास कलेक्शन है आपका. और जैसा कि हम जान पा रहे हैं, सभी आपसे आपके उससे आपने ही शूट किया है. तो दीज आर द रेयरेस्ट मोमेंट व्हेन व्हिच यू